एक्सपीरियंसेस तो हम सबके होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, कुछ सालों का, बहुत सालों का एक्सपीरियंसेस। एंड ये सब एक्सपीरियंसेस लेके हम जब अपने जिंदगी में कुछ ऐसा सोचते हैं या कुछ बाकी लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए करते हैं, देन वो एक्सपीरियंस वैल्यूएबल हो जाता है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मिस्टर जेफ सेंस के। एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, 3-4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप सब उनको जानते हो, पहचानते हो। यहां पे उनका एक कॉन्सेप्ट है जो हॉबीइस्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, हॉबीज सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है, हॉबीइस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड ये कॉन्सेप्ट है ग्रीनिंग। नाउ ये ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट के 3 वीडियो बने हैं, येट इसमें मेरा और उनका कॉन्वर्सेशन था। एंड बहुत लोगों ने मैसेज किया कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, इसलिए मैंने जेफ से रिक्वेस्ट किया कि छोटे छोटे 2-3 वीडियो दे जिसमें सिर्फ वो बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं। नो, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शांति से समझो और देखो, आप बातें समझ जाओगे। एंड उनका एक्सपीरियंस उनके बातों में छलकेगा, आप देखोगे कि ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जेफ, ग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे आपने बताया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, राइट? बट जनरली आप हॉबीज के लिए ये बताएं कि एक कहां से शुरू करना है, कैसे स्टेप वाइज उसको बिल्ड कैसे करते हैं, यू नो, व्हाट शुड वी कीप इन माइंड, आप जरा बताएं तो अच्छा रहेगा। So we like to always start and place our attention on the hardscape. I can't stress this enough. Really spending the time to find the right driftwood, the right stones, or a combination of the two. And you can see this is a great example where the hardscape was built first. So even before I put anything on the bottom, I've constructed my hardscape, and I'm doing that just even on top of the bottom glass of the aquarium. This is totally fine. And then I'm starting to think about the plants, of course, but really the next step would be just to cover the bottom glass. And you can see I generally am using a very thin layer, almost the minimum layer needed just to cover the bottom glass, because a lot of depth here is going to be a trap for debris and organic matter and buildup. This keeps it very, very easy to clean. And so I might just lightly stir it, or I might occasionally replace it just by siphoning out this very small amount of sand and replacing it with some fresh. But really it's that the hardscape is the star of the show in the greening style. So we're working with hardscape, we're working with a minimal amount of a cosmetic sand or gravel on the bottom. From there, if we're choosing to use CO2, then the equipment is very similar to a traditional aquascape with soil, etc. We want a robust canister filter that's obviously packed with the appropriate media. In a good quality light, though, I'll often make the layout to where I'm putting emphasis, let's say, just on one side. So in other words, I happen to already have a light suspended here on this display, but I could have had a smaller, less expensive clip-on style light here, and maybe this light's only coming out this far, and I'm going to design my scape such that this open area doesn't really need light. I'm definitely gonna use my even more shade-loving plants out in the open area, for example. So there's all kinds of ways to calibrate your aquascape to your available equipment, and this just keeps it, again, just a very versatile style. You can see we've gone from things that look like a very traditional aquascape to things that are more conceptual, and using different gravels and sands on the bottom, different textures of wood and stone. You know, again, we can start to open up a very vast palette and a lot of possibilities, all with the same core
variables, the same core equipment. This is like learning how to cook. If you didn't know how to make the dish and you got a recipe, you would suddenly have a roadmap. You would now have a way to get there that you didn't have before. And once you know the recipe over time, you can change the dish to your tastes. You can modify and evolve that dish. And this style is very much like that. Once you know the core sequence or recipe, there's just a huge amount of possibility in terms of how you bring it into life. So Jeff, आपने ये तो समझाया कि ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट विद CO2 अगर डालना है तो कैसे हम डाल सकते हैं, अगर विदाउट CO2 करना है तो हम कैसे करें, प्लीज समझाइए ना. So this is another concept where you can apply the greening style, and this has no CO2. And when I don't have CO2, I do avoid mosses. Now they'll grow in a non-CO2 layout, but they tend to be sort of stringy and a little unpredictable. They can also grow, again, kind of a little, I would say, out of control. And so if I take away the CO2, I do try to focus more on Anubias and then the Bucephalandras. They love a non-CO2 layout. You can use them very freely. And another huge benefit is the ability to have very low lighting. And so these plants are happy almost in the dark. So by using just the Anubias and the Bucephalandras here, I've tried to kind of go with the more exotic Anubias, and we have the Anubias Pinto and some other white-leaved variations, and really try to go with this bright, clean look with the white sand, a few white stones in the back. And again, my real visual impact is coming from the hardscape. So the first thing we're seeing is the very intricate spiderwood, and then again we're kind of using more of this white-leafed plant just to give a different vibe, a different feel. But really, the exact same principles apply, and it's a way to do this in the low-tech way that has, I feel, a more sophisticated sort of final product to it. जब से इंस्पायर होके मैंने भी एक ग्रीनिंग का एक्वास्केप बनाया है, एंड अगर ये इसका बनाने का वीडियो आपको देखना है और हमने कैसे बनाया अगर देखना है तो इसका लिंक वीडियो के आखिर में है, तो आप ज़रूर देखना एंड आप एंजॉय करोगे. मेरा एक्सपीरियंसेस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस, मैं सोचता हूं कि अभी भी मैं सीख रहा हूं, जिंदगी को अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ठीक है. एंड जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, जेफ हो या तकाशी अमानो हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, एंड अपना भी जिंदगी का कुछ वैल्यू होता है. मैं भी अपने वीडियोस के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, एंड ये मेरा मानना है कि ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं. सो मैं आशा करता हूं ये वीडियो से भी आपने कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा, मजा लिया. एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत ही स्पेशल थैंक्स है मिस्टर जेफ सेंस्के के लिए. एक तो हमें अमेरिका में उनकी गैलरी में मौका देने के लिए, प्लस ये बहुत ही यूनिक पॉइंट्स हमें संक्षेप में समझाने के लिए. नाउ बहुत सारे और वीडियोस हैं, बनते रहेंगे, आप देखते रहोगे, मजा लेते रहोगे, मैं भी वीडियोस बनाते रहूंगा, मजा लेते रहूंगा. सो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय.